सेल्फ स्टडी और ग्रुप स्टडी? सेल्फ, ग्रुप में तो बातें ही होती है. यूट्यूब में शॉर्ट्स या वीडियोस? शॉर्ट्स. इंस्टाग्राम और फेसबुक? To be honest, I am not there in both. I was not expecting rank, but I was hoping to clear. But then I was sure that I will clear. Sir, I would like to thank you a lot for such a beautiful drone chart, sir. Especially like आपने जो टेबल बनाया था 6 criteria heading, मैंने उसे ही छापा था. I'm damn sure it was because of that I got like I could picturize like इस पेज में इस साइड में ये डायग्राम था. AIR2 को सुनने आए हो. उसके साथ हुआ ये इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ. We'd been talking for like 40 odd minutes with her and believe me, जो insights Ramyashree AIR2 from Mangalore से मिली है like exceptional. क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स पर जहाँ पर मुझे लगा कि यार she is a ranker, she would be different from other students. जैसे कि पढ़ाई करते समय उसे नींद नहीं आती होगी, या सोशल मीडिया वो नहीं देखती होगी, या व्हाट्सएप अनइंस्टॉल करा होगा, या बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए होंगे, या पेपर बिगड़े नहीं होंगे, या पेपर आने के बाद डिस्कस नहीं किए होंगे. इन सब जगह मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक सामान्य, एक आम, एक नॉर्मल सीए स्टूडेंट जैसी परछाई दिखी. एंड अ लॉट ऑफ फंडामेंटल्स जो स्टूडेंट के जो नोशंस होते हैं जिसके कारण से वो सेल्फ डाउट क्रिएट करना शुरू कर देते हैं. स्पीकिंग टू हर आई रियलाइज्ड दैट इज एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप लोग, दो इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, एंड थैंक यू रम्यश्री फॉर गिविंग दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम, बिकॉज आपको मालूम है सीए फाइनल के रैंकर्स अभी घिरे हुए हैं इंटरव्यूज से. इंडिया टुडे, इंडिया टीवी, अलग अलग चैनल्स, फैकल्टीज एंड ऑल. For that all reason, despite all of that, she could take out so much of time because she was keen to share that insight with the students. Strongly recommend कि आप लोग देखिए इस वीडियो को पूरा आखिरी तक. चलिए, hello everybody. So this is the time to welcome All India Rank AIR2 Ramyashree from Mangalore. CA Final November 2022 में All India second rank लाने वाली Ramyashree, welcome to the show, welcome to this talk. Thank you for your time. Thank you so much, sir. Thank you so much for calling me. चलो, अब सबसे पहले रम्याश्री, the very first question is what happened जिस दिन रिजल्ट आने वाला था as in yesterday? Yes sir, actually मैं अपने बहुत स्ट्रेस में थे. Like I was totally tense, like क्या होगा, like will I clear or not. So I was reading my brother's book, Autobiography of a Yogi, to keep myself calm. Oh, So okay. yeah, and then I thought I'll go to temple. Yesterday was Sankash day, day meant for the Lord Ganesha. So I thought I'll go to Lord Ganesha temple and to pray that I should at least clear. But then when I was on my way, I got a call from ICA president, Ramyashree, this is ICA president. Congratulations, you have cleared within AIR2. For a second, I thought that it was a prank. One of my friends were calling me and telling that you got a rank and all. So I never expected that. I confirmed it, sir. Sorry, sir. Then he was like, I am ICA president. I'm like, oh, okay, thank you, sir. Because I was not expecting that call. And then भगवान जी को कहा कि मैं थोड़ी देर बाद में आऊंगी. And I took a U-turn and I came home running to tell my family that yeah, I cleared, I did it. So it was like unexpected that those 5 to 10 minutes of my life, I'll never forget it. उसके बाद calls. I understand. I mean, you know, it was a God-sponsored call. Yeah, exactly. I felt the same. And tell me one thing, Ramyashree, do you speak Hindi? Are you comfortable with Hindi? Yeah, sir. Yeah, I can speak. बात कर सकती हूँ. बढ़िया, ये तो बढ़िया हो गया. So you tell me in terms of, as you said, कि you know it was thinking कि ऐसा prank तो नहीं है. Did you expect AIR2 before the नहीं results? sir. No, actually no. Since I got AIR16 in my intermediate, so my family and my friends were like expecting me to get, so that build a pressure on me, like okay, लोग मेरे से expect कर रहे हैं, तो मेरे को अपनी इज्जत बचानी थी पहली बार में clear करके. Because I was consistently a rank student, be it in 10th, 2nd PU boards or inter, so there was a lot of pressure on me.
तो ओके। रैंक तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मेरे को लगा था कि मेरे एग्जाम्स बहुत खराब गए, स्पेशली डायरेक्ट टैक्स एंड लॉ। मैं घर आके रोई भी थी उस दिन। तो ओ आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग रैंक, बट आई वाज होपिंग टू क्लियर, बट देन आई वाज श्योर दैट आई विल क्लियर। एटलीस्ट 90% का कॉन्फिडेंस था कि यार क्लियर तो होगा। ओके। बट रैंक का तो एक्सपेक्टेशन नहीं था, वो भी AR2 तो सपने भी नहीं देखा था मैंने। तो rankers, I mean, क्योंकि you said that you've been a rank student all throughout. So if I ask you this question, कि what is the difference between a student जो consistently attempt after attempt rank लाता है और एक student जो नहीं ला पाता है या उसके बीच में कहीं ना कहीं breaks लग जाते हैं, what is that point of difference? यूजुअली द प्रेशर सर, लाइक अगर एक बार आपको रैंक आया तो सोसाइटी का बहुत प्रेशर रहता है कि यार एक बार आया तो दोबारा भी आ ही जाएगा। तो आप नहीं लाओगे तो आप सेल्फ डाउट करने लगो कि यार पहली बार Okay, शायद लक से आया होगा। तो okay. तो एक बार आ गया तो you also believe and then people also make you to believe, so हाँ, it gets into that fathom. Okay, wonderful. एग्जैक्टली। And I mean, tell me, like I'm sure कि as you said DT और law का पेपर बिगड़ा था, तो how did you manage those ups and downs which happened during the examination period? वो कैसे law के आने के बाद एकदम से मन लग गया था पढ़ने के लिए for the next paper? How did it happen? या एफआर मेरा अच्छा गया था, तो आई वाज लाइक ओके, फर्स्ट पेपर तो ठीक ठाक था, तो आई थिंक आई कैन गो अहेड। सो कॉन्फिडेंस के साथ एफआर अच्छा गया, एसएफएम अच्छा गया, ऑडिट भी ठीक ठाक था। और लॉ तो उन्होंने एकदम खराब ही कर दिया था। लाइक आई माय कॉन्फिडेंस टोटली ब्रोक एंड आई वाज क्राइंग, कमिंग होम एंड क्राइंग। और एसएमपी के लिए 2 दिन छुट्टी थी थैंकफुली, तो आई कुड अफोर्ड टू क्राई फॉर दैट इवनिंग। And then my family supported a lot to me. Like they were like, anyway, you've given up hope. Now go and write second group and come. देख जो होगा देखा जाएगा। तूने इतने बार, I mean, I've been studying seriously for 4 months. They were like, इतना पढ़ाई किया है, वेस्ट मत करो, जाके लिखे आओ। ये सेम था Okay. मेरा इंटर में भी। Like I thought I'll not write only, like I'll give up. Then my Okay. family was like, no, यहाँ तक आई हो, just 8 दिन की बात है, जो होगा देखा जाएगा, तो एग्जाम लिखे आ। तो फैमिली सपोर्ट वाज ऑसम एंड इवन आफ्टर डीटी आल्सो, डीटी वाज लाइक बहुत खराब था मेरा। लाइक आई फेल्ट आई वुड नॉट क्लियर ऑन इन दैट डीटी। आई वाज काउंटिंग मार्क्स, लाइक हर आके इसका एक मार्क नहीं, 2 मार्क नहीं, 3 मार्क, ऐसा होता था मेरा। एक एक राउंड के बाद मैं और मामा साथ में बैठ के मार्क्स काउंट करते थे कि शायद वर्स्ट के सिनेरियो में कितना मार्क्स आ सकता है। तो वो Oh. सब होने के बाद आई थॉट इट विल गेट एटलीस्ट 50s के रेंज में आ सकता है, मीन वर्स्ट वर्स्ट के सिनेरियो में। तो Okay. सबका मैंने आधा आधा मार्क काट के दिया था, तो इट वाज लाइक स्ट्रेसफुल था बहुत, स्पेशली लॉ के बाद और टैक्स के बाद सिर्फ एक ही आईडीटी था। तो आई कुड पुश माई सेल्फ, लाइक चल 2 दिन है, उसके बाद तू आराम कर सकती है। तो इट वाज डिफिकल्ट ड्यूरिंग दोज 8-16 days का पीरियड। लाइक बहुत हेक्टिक था। I know it is the most strenuous period of your life probably. एग्जैक्टली। करेक्ट, बट डीटी में यह है कि बिकॉज ये आपकी आखिरी पेपर सामने ही है तो चलो ठीक है, निकल जाएगा। हाँ, दैट like रिवॉर्ड इज there टू was गुड। one thing like DT, everyone is expert in direct taxes until it comes to the CA final examination question paper. Like office में तो सब DT मेरा favorite है। In fact, I wanted to after clearing my CA finals, I thought I'll go to direct taxation only. But DT अच्छा, paper देखने के बाद मेरा like क्या ये मुझसे हो रीथिंक कर। पाएगा? या चलो, मतलब एक चीज समझ में आ गई कि किसी का कोई पेपर अगर बिगड़ रहा है और उसे लग रहा है एग्जाम छोड़ दो, तो देर हाँ, इज अ तो बिग डेफिनेटली नहीं। नहीं या छोड़ना है, और बहुत डेफिनेटली बड़ी नहीं। पॉसिबिलिटी है कि एआईआर भी आ सकती है। हाँ, या आई मीन 2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ था। इंटर में भी मेरे को मेरा डीटी खराब गया था, ऐसे मैंने सोचा था। बट इट एक्चुअली आई गॉट गुड मार्क्स इन डीटी बोथ इन इंटर एंड फाइनल। सो आई लाइक नेवर गिव अप। एक ओके। पुश करो अपने आप को, इतना पढ़ाई किया है ओके। तो पढ़ो। ओके। एंड जैसे अपनी बात हुई थी अपनी पहले, तो यू टोल्ड मी दैट यू हैड टेकन क्लासेस फॉर वेरी सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स ओनली. So you took I just audit and just a few couple of subjects only तुमने classes एग्जैक्टली। ली थी, right? So others you could manage on your own. तो why या do you think that audit के लिए क्यों लगा कि ऐसा क्लास लेना चाहिए? पहले आई थॉट कि यार सेल्फ स्टडी करते हैं। देन आई थॉट आई विल रीड इट ऑन माय ओन एंड फर्स्ट 2 chapters I read, I did a mistake of starting with essays. अच्छा। Looking at the study material, it also, I mean, the content is good, but you don't get the feel to it because it is plain black and white color. True, Then I true. thought, I asked one of my seniors that where did he take coaching classes from. So he was like, there is a faculty called Sarthak Jain. So and he Okay. showed me your drone charts and all. So अच्छा। to be honest, आपका ड्रोन चार्ट ही मैंने पढ़ा था एसएस के लिए। आपने जो पिक्चर्स डाले थे, आपके जो इलस्ट्रेशंस है, स्पेशली द प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का जो आपने एग्जांपल दिया था, रात के 10 बजे 11 बजे पापा मामा का कॉल आता है, तो
like I could relate it too much that I like example याद आए तो concept में लिख सकती हूँ, ऐसा याद आता था मेरे को. True, So true. yeah, audit. I thought I'll do self-study, but I couldn't do. I lost the Okay. confidence in essays. So I thought, yeah, सार्थक से नहीं चलेगा. Okay, And I okay. also took classes for economic laws, which was my paper 6D. I took eco laws as 6D. Okay. And I thought I needed class for FEMA. Acha, for that reason. So yeah, I took classes. ठीक है. In fact, I should thank you for taking the classes because fastest से proud have you as a student. So yeah, thank you for that. Any feedback on the classes material? Yeah, definitely, sir. I would like to thank you a lot for such a beautiful drone chart, sir. Especially वो special audit के लिए आपका the drone charts था, NBFCs या फिर investigation due diligence. In fact, वो forensic audit के question आया था, difference between forensic audit and other audit. Like आपने जो table बनाया था, 6 criteria, heading, मैंने उसे ही छापा था. I'm damn sure it was because of that I got like I could picturize like इस page में इस side में ये diagram था और आपको दूसरा investigation का chapter में शायद वो एक लड़की मैनेजमेंट ऑडिट एंड ऑपरेशनल ऑडिट डिफरेंस एक लड़की एक चार एक अब आंखें बंद करोगे तो आपको पिक्चर नजर आएगी कि यार इधर ये है तो आई गुड इट वाज विजुअल पिक्चर फॉर्म में. तो बढ़िया है आपका ड्रोन सेटिंग. इनफैक्ट एस्ट्रेस तो मैंने उसी से पढ़ा था एंड आई कुड रिलेट. आपका वीडियो भी देखा था मैंने क्लासेस में तो लिया ही था, फिर रिवीजन के लिए आपने यूट्यूब में वीडियोस डाला था एस्ट्रेस का, तो रिवीजन के लिए भी आई जस्ट रेफर्ड ओनली दैट एंड आई एम डैम श्योर आई डिड गुड इन दैट. सो बढ़िया, आई एम रियली फैन ऑफ इट सर. नहीं, थैंक यू सो मच. इनफैक्ट वो सोच के बनाया था कि एज इन क्योंकि वो एक तो प्लेन वनीला है, एग्जैक्टली एटलीस्ट तो रिलेट हो जाए. जस्ट फॉर मेमोराइजिंग वी डिड इट. बट टेक्निक इज इट्स अ रीइंफोर्समेंट की जो किया वो ठीक है. इट्स अ थॉटफुली वेल थिंग. ग्रेट यार. एंड इवन सर आपका स्पेशल ऑडिट में भी आपने नीचे 2 क्वेश्चंस दिया था ना, लाइक इस अटेम्प्ट में ये पेपर से था, हर एक पेज के नीचे था. तो आपने भी एक क्लास में कहा था लाइक अगर एक चैप्टर मिस करना चाहते हो तो उसमें पेज पलट के देखना है कि कौन से पेज के नीचे में ज्यादा क्वेश्चन है, सिर्फ वो पेज पढ़ के जाना है बस. So even I did that for one of the chapters. So बहुत काम है sir. Even I could skip RTPs, MTPs because of that drone chart because नीचे questions था. So when I was reading the drone chart, I was simultaneously solving the questions also in that. Okay. चलो यार. It really helped me. Thank you. मतलब it makes our day. In fact, thank you so much. अब ये बताओ तुम्हारी प्रिपरेशन लीव कितने टाइम की थी? मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी लिया था. I mean 2 years I did articleship and 1 year I did industrial training. So I could have given my attempt in May 2022, but because of industrial training, I thought I'll skip it and give in November. So I got leave from July 1st. I got 4 months study leave. July, August, September, October, November exams था. So I was done with your classes and other one time like plain reading मेरा जुलाई 1st तक हो गया था. तो उसके बाद इट वाज लाइक फर्स्ट टाइम रीडिंग. क्लासेस सब खत्म हुए थे, सो रीडिंग एंड आरटीपीज एमटीपीज व्हाट इट वाज आफ्टर द फर्स्ट टाइम रीडिंग. इट वाज डन बाय August 15th. I took all the past 8 year का I mean 4 year का 8 attempts, RTPs, MTPs 2 और क्वेश्चन पेपर सारे के सारे मैंने सॉल्व किया था. अच्छा. And I used to study for 12 hours in July, August, and it went on to 16, 17 hours. So yeah. Yeah. So what was your daily schedule? I mean schedule in terms of सुबह कब उठते थे, क्या टाइम रहता था? सुबह में 6:30 बजे तक लगभग उठ जाती थी क्योंकि आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन. सुबह उठने में बहुत लेजी फील होता था, तो आई वुड सिट एट नाइट. So I would start studying at 7:30 and morning first I used to study audit and उसके बाद 1.5-2 घंटे के बाद I used to go for SFM, practical theory ऐसा combination था मैं, because I couldn't sit and study the same thing for the whole day. It would bore me. So उसके बाद SFM के बाद लॉ एंड दोपहर को कॉस्टिंग ऐसा कुछ. एंड देन आफ्टरनून आई यूज्ड टू स्टडी टैक्स बिकॉज प्रैक्टिकल्स भी था और इलस्ट्रेशंस भी था, सो इट केप्ट अदरवाइज आई वुड फॉल asleep. एंड इवनिंग कुछ थ्योरी अगेन, इकोनॉमिक लॉज एंड नाइट अदर सब्जेक्ट्स. So I used to sit till 12:30. Okay, so 6:30. I mean 12:30 to 6:30. That's the only sleep time. Otherwise, throughout the day, you had these punctual schedule. Yeah. Rankers और AIR2 को भी पढ़ते ऐसे नींद आती है, झपकी लगती है, ऐसा होता है? Of course, human है हम भी. दोपहर को बहुत होता था. And even usually during my articleship and all, I used to sleep early, like 10 o'clock के अंदर मैं सो जाती थी. तो मेरे को इंटर में भी I used to sleep from 10 o'clock to 6 o'clock in the morning. Like मेरे को 8 घंटे की नींद चाहिए होती थी. So I was used to that 10 to 6 sleep. Suddenly when like 12:30 तो वो 9 से 10 के बीच में थोड़ा मुश्किल होता था बैठ के पढ़ने के लिए.
बट ओके। वॉशरूम जाके आंखें में पानी डाल के 5-5 मिनट में एक बार, और फिर 5 मिनट अलार्म लगे 5 मिनट सो जाना, उसके बाद देखना कि यार आधा घंटे हो गया है, उठो। ऐसा होता था। तो या यूज्ड टू गेट स्लीप, बट या दैट्स अ ओके, पार्ट एंड पार्सल। गुड यार, मतलब इससे एटलीस्ट समझ में आता है कि दिस इज नॉर्मल विद एनीबडी हैपनिंग, ये होता है सबके साथ एग्जैक्टली, होता है। या सबके करेक्ट, साथ इट्स होता जस्ट है। दैट, आई मीन ठीक है, वापस उठना इंपॉर्टेंट है, नींद तो सबको लगती है। तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होता था क्या कि मतलब पढ़ाई में और जोश में दोनों की लड़ाई में बीच में मोबाइल फोन जीत जाता था कि 5 मिनट मोबाइल? Yeah, I done the one thing of like uninstall नहीं किया था मैंने WhatsApp, because my I wanted to get to know what was happening around. My friends were texting also, but मैंने notifications mute किया था। दिन में ओके, 5 मिनट, मतलब 5 ही मिनट खत्म, उससे ज्यादा मैं WhatsApp चेक भी नहीं करते थे। अच्छा, इज तो इट ओके? या मेरा फ्रेंड्स भी पूछते थे कि यार WhatsApp है तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज दे ऑल अनइंस्टॉल्ड WhatsApp। आई थॉट ओके। लाइक क्या फर्क है, अनइंस्टॉल करो या खोलो ही मत, फर्क तो सेम ही है। एंड आई हैड दैट लाइक आई कुड कंट्रोल माई सेल्फ, लाइक नहीं 5 मिनट मतलब 5 ही मिनट, ज्यादा नहीं। ओके, तो यार वेरी गुड। तो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यूट्यूब वगैरह देखते, खैर वो तो रिविजन और उनके लिए देखते होगे। हाँ। बीच में नहीं, ऐसे दोपहर को अगर बोर हो जाता तो आई लव शायरीज, आई राइट शायरीज, तो कभी कभी ओ, राहत इंदौरी साहब का, गुलजार का एक दो शेर सुन लेते थे। बट या वाह। मैक्स टू 15 मिनट्स तक ये होता था। एनी शायरी जो तुमको इट केप्ट यू गोइंग, या तुम रिकॉल करती थी व्हेन यू वर ऑन अ लो पाथ? नो सर, आई यूजुअली लिसन टू रोमांटिक शायरीज, तो खुद लिखा भी था तो ऐसा मोटिवेटिंग शायरी उसकी जरूरत नहीं पड़ी तुमको? एनी ऑफ योर शायरीज व्हिच यू लाइक टू शेयर? यस सर, मैंने एक काइंड ऑफ सॉन्ग लिखा था, तो वाह, मैं अर्ज किया है। अर्ज किया था। एक सेकंड सर, मैंने आज सुबह फेवरेट्स में डाला था। ओ वाह। तो लोग पूछते रहते हैं कि आप शायरी कैसे लिखते हो, लाइक व्हाट मोटिवेट्स यू टू राइट शायरी, कि फीलिंग कैसे आता है। तो उस राइट। पे लिखा था कि इंतजार हमने भी किया था, मोहब्बत हमने भी खोया था, यूं वाह ही वाह नहीं दर्द लिखते हैं हम, मेरी जान, वाह किसी खास ने दिल हमारा भी टूटा था, इश्क हमने भी वाह। किया था, यादों ने हमें भी रुलाया था, यूं ही नहीं शायर बने हम, मेरी जान, किसी कास्ट ने दिल हमारा भी तोड़ा था। हाय हाय हाय, क्या बात है! एक्सीलेंट। आई थॉट तुम इंग्लिश में शायरी बोलोगी और तुमने हिंदी में लिखी, वो भी इतनी बढ़िया। फिनोमिनल, थैंक यू वेरी सर, नाइस यार। शुक्रिया शुक्रिया। तो ये जो दिल तोड़ा वाला है, ये कोई एक्सपीरियंशियल लर्निंग बेस्ड है या ये? नहीं नहीं सर, मतलब लाइक मेरे घर के पास में ही बीच है, तो व्हेनेवर ओके, आई यूज्ड टू फील लो आई यूज्ड टू गो एंड सिट देयर। तो वहां ओके, का ब्यूटीफुल सीनरी, काम था, सनसेट था, अच्छा। मैं प्लग इन ईयरफोन, एक मूड बन जाता था मेरा शायरी लिखने के लिए तो। चलो, great. Good to have that. In fact, thank you for sharing that. Really appreciate. And I'm sure CA में रहते हैं तो you need some or the other kind of thing like this, एग्जैक्टली, पागल हो जाओगे वरना आप। डिटॉक्स करने के लिए चाहिए ये सब। वेरी नाइस यार। अब है ना, मैंने क्या स्टूडेंट से पूछा था कि AIR2 के साथ इंटरव्यू है, तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू प्लीज शेयर। तो उन्होंने एक लंबी सी लिस्ट दे दी है। यू कैन गिव अ वन वर्ड, वन लाइन, वन पैरा आंसर द वे यू वांट, बट दीज आर देयर क्वेश्चंस। कुछ मैंने पूछ लिए हैं, कुछ बाकी हैं, तो आई गॉट इट जॉटेड डाउन हियर एंड आई विल आस्क यू ओके, वन आफ्टर द अदर। लाइक ठीक केबीसी है? जैसे फील आ रहा है मेरे को। Right, right. चलो बढ़िया। तो मतलब मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे रोमांटिक शायरी वगैरह लगते, नहीं तो वी वुड हैव गॉट सम एंकर और कॉफी विद करंट टाइप का फील रखते हैं अपन। अगले बार करेंगे सर। नेक्स्ट टाइम। ग्रेट। चलो, तो मोबाइल तुमने बता दिया, व्हाट इज योर फेवरेट पास टाइम? शायरी सर। शायरी, चलो, तो दैट वाज या डन। Any point of time where you felt absolutely low in the last 4 5 months of your preparation? Did it happen with you and how did या you come up? एक बार मैं एसएफएम पढ़ रही थी, आई थॉट एसएफएम वाज माय लो में वीक पॉइंट, सो व्हेन आई वाज स्टडीइंग एसएफएम आई सॉ वन क्वेश्चन पेपर, आई थिंक कोविड के बाद जो एक साल बाद एग्जाम नहीं हुआ था, उसके बाद एक एग्जाम होता है शायद नवंबर 21 या दिसंबर 21, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। उसका एक भी क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर पाती थी। आई मीन आई Oh, फेल्ट सो लो, लाइक क्या मेरे से हो पाएगा कि या नहीं, आई फेल्ट सो, आई मीन इतना सेल्फ डाउट आया था मेरे को कि यार एक बार लगा कि मैं छोड़ दूंगी, मुझसे नहीं होगा ये। एंड आई सॉ oh, ऑलमोस्ट, उसके बाद उसी डिप्रेशन में मैं आई ट्राइड सॉल्विंग अदर क्वेश्चन पेपर्स, लाइक ऐसे हमने तो कोई और देखते हैं। एंड सिंस आई हैड दैट थॉट दैट आई कुडंट डू, I was not able to do any other papers also. So I felt really low. I went and I hugged my mom and she was doing chapati, रात का खाना बना रही थी। मैं अचानक से उसके लिपट के रोने लगी। मॉम वाज लाइक क्या हुआ, किसी का कॉल आया था?
लाइक वो डर गई थी अचानक से, लाइक अभी तक तो ठीक थी, अभी क्या हुआ इसे? एंड आई ओह, टोल्ड लाइक यार मेरे को आई एम गेटिंग दैट नेगेटिव वाइब्स दैट आई कांट डू, व्हाट शुड आई डू? उसके बाद बैठ के संभाल के मुझसे लाइक मेरे माँ पापा और मेरे पापा की बहन, जिसे मैं प्यार से मम्मी बुलाती हूँ, वो मेरे दूसरे माँ की जैसे ही है। तो ओके, उन सब ने मेरे साथ बैठा लाइक हाफ एन आवर 1 आवर, लाइक इट्स ओके फाइन, टेंशन मत ले, नहीं होगा तो नहीं होगा। आई मीन आई हैड दैट थिंग दैट सिंस आई वाज द रैंक होल्डर, लाइक लोगों के एक्सपेक्टेशंस है मुझ पे, दैट वाज अ डबल प्रेशर ऑन मी। So I was like, राइट, करना है तो करना है। That time I felt low. Then my dad, it was like, is a hero for me. He was like, नहीं होगा तो इट्स ओके, इफ इवन इफ यू डोंट क्लियर दिस टाइम, अगले अटेम्प्ट ना जनवरी में रिजल्ट आएगा, फेब मार्च अप्रैल मई में तो दूसरा अटेम्प्ट है ही। लाइक लोगों को तुम छोड़ दो, वो हम संभाल लेंगे। लाइक यू डोंट, आई मीन उससे देखा नहीं गया मेरा वो हालत। लाइक यू डोंट सिट लाइक दिस, इफ यू डोंट क्लियर इट्स फाइन, बट डोंट सिट एंड क्राई लाइक दिस। I can't see हाँ, you like this. So yeah, it happens with everyone. Like you start self doubting yourself. Like यार मैंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं लिया था। ट्रू, But then ट्रू, one thing I would like to say is never quit. इस बार नहीं तो अगले बार हो ही जाएगा। And he always used to say that CA ही जिंदगी नहीं है, बाकी सब भी है। Like it don't make it too serious that you lose yourself in the process. So I followed that all the time. Like be calm. And my brother भी एक बार कहा था कि यार whenever I was low, I was like, एक मैंने कहा था अभी SFM का क्वेश्चन पेपर नहीं हुआ तो मैं बाकी भी नहीं कर सकती हूँ। तो अगले दिन जब मैंने देखा calm mind, so then I was able to solve at least to some extent. Because of that panic stress, I was not able to solve the previous day. So when राइट, even he told the thing that mind is like water, as long as it is still, you can see your reflection. But when you put ओके, stone or any other leaf, it get ripples and you can't see your vision clearly. So it's like keep your mind as water. Stay calm, it's fine. Like he is the coolest person I've ever seen in the world. वो सुबह एग्जाम वेरी होता है, या सुबह एग्जाम होता है तो वो सुबह पूजा करके आराम से बैठ जाता है। लाइक 4 बजे उठता था वो, 4 से 6 बजे पढ़ता था, बस बुक खत्म, फिर पढ़ाई नहीं। बट स्टिल ही गॉट गुड मार्क्स एंड ही गॉट प्लेस्ड आल्सो। आई एम लाइक कैसे रहते हो यार? हम लोग लाइक 5 मिनट 145 क्वेश्चन पढ़ते, 140 तक हम पढ़ते थे। लाइक ये नहीं वो नहीं हुआ ना। आई गुड, माय फैमिली स्टिल लाइक लर्न फ्रॉम हिम, उससे सीखो काम कैसे रहते हैं। तो यार, या I mean, yeah, I mean, that's an input and family calm. I mean, definitely they play a strong role, यार, इस समय का. एग्जैक्टली एग्जैक्टली It helps. And I've also felt as dads have this ability to simplify things so much, which एग्जैक्टली sometimes works. या So, लाइक यू विल गेट कन्विंस्ड इजीली। लाइक ऐसे समझाते हैं कि यार इतना बड़े प्रॉब्लम भी नहीं है हम लोगों के लिए। सीए लाइक सीए, बट इज लाइक इट्स ओके, सीए ही तो है। हाँ, ठीक है. एंड यू गेट कन्विंस्ड विद दैट आल्सो। ठीक है, नहीं मैं रिलेट कर पा रहा हूँ इससे. इनफैक्ट बिकॉज आई हैड सिमिलर इंस्टेंसेस एंड इट वाज माय डैड हु एक्चुअली हेल्प मी कि वो इससे बाहर निकलने का. तो और हाँ इनके वन लाइनर्स होते हैं, 2 सेंटेंस में तो पूरे फंडे साफ कर देते हैं एकदम. हाँ एग्जैक्टली। दैट्स ग्रेट यार, गुड. एंड फिर उसके बाद में तुम्हारा क्या था, रिवीजन प्लान क्या था इन लास्ट, फॉर हाउ मेनी रिवीजंस? एज आई टोल्ड दैट टाइम, लाइक मेरा फर्स्ट रीडिंग, अब क्लासेस सब खत्म हुए थे मेरा जुलाई के अंदर ही। सो जुलाई से अगस्त तक आई वाज लाइक फर्स्ट रीडिंग हुआ था मेरा। ओके, उसके बाद अगस्त 15 से सितंबर 1 तक मेरा एमटीपीज आरटीपीज सारा एक बार हुआ था। ओके, एंड व्हाइल डूइंग द फर्स्ट रीडिंग आई यूज्ड टू मार्क लाइक ये क्वेश्चन इसमें थोड़ा अपना आपका एमसीक्यू और वगैरह बुकलेट क्वेश्चन पेपर आपने दिया था ना, सो देयर यू हैड टोल्ड टू मार्क 1 स्टार 2 स्टार एंड आई यूज्ड टू डू दैट। Like exam के, because in that 1.5 period का gap, whatever you get after one exam, you will not be able to revise the entire syllabus. So I should do that, and I started my first revision in September 1st. ओके, 15-20 days में मेरा खत्म हुआ था first revision, and when I went for second revision, it was done by October 10. ओके, And उसके बाद third revision किया था मैंने, including RTPs, MTPs. So total 2 revisions काफी होते हैं, as I say, first reading plus 2 revisions, and 1.5 day में तो आपका हो ही जाता है एक बार. राइट. हाँ, वो है ही. एंड मॉक टेस्ट कितने दिए थे? हाँ mock test I just gave one mock test of ICI only. वो ओके, ऐसे बट रिलीज करते ना सितंबर। हाँ ऑल पेपर्स, लाइक 3 आवर्स बैठ के मैंने घर पे लिखा था, लाइक वो टाइम स्लॉट रखा था, पूरा ओके, एग्जाम फील का ये था। ओके, पेपर्स सारे कंप्लीट हुए तुम्हारे? हाँ आई मीन आई वाज गुड एट, मेरा स्पीड बहुत अच्छा था, आई हैड कॉन्फिडेंस इन दैट बिकॉज 3 years आई लॉस्ट द टच ऑफ राइटिंग बिकॉज इट वाज सब कुछ एक्सेल या वर्ड में ही था। तो माय मॉम ऑलवेज यूज्ड टू से दैट स्टार्ट प्रैक्टिस राइटिंग। I mean, whenever you read for the first time, write, else you lose the touch of writing. And I, in fact, did lose the touch of writing. Then in July, when I started to solve question, like मेरा हाथ आगे नहीं बढ़ रहे थे, like हाथ ने ओह, धोखा दे दी मुझे, ऐसा लग रहा था। अच्छा. तो उसके बाद मैं रोज, मेरा हैंड राइटिंग उतना अच्छा नहीं था, तो मेरा मम्मी, जैसे मैंने कहा पापा की बहन, वो मैं से रोज 4-5 पेज कॉपी लिखवाती थी, ऐसा लग रहा था कि मैं ओह, एलकेजी की बच्ची हूँ।
अच्छा. तो रोज मैं इतना बड़ा लंबा बुक लेके 4 पेज कॉपी लिखती थी, सो दैट हेल्प मी गेन माई स्पीड. मैंने लिखा था कि 1 सेकंड में 4 लेटर्स होना ही होना है, सो दैट वाज माई कांस्टेंट स्पीड. So I अच्छा. was able to complete the paper. In fact, I even during my exams, I always thought that 4:30 बजे के अंदर मेरा पेपर खत्म होना है. That remaining half an hour was for checking because I remember I do mistakes in the first time, like 09 की जगह 90 लिखना है. ऐसा कई बार मेरे से हो जाता है. अच्छा. So I kept that half an hour slot for checking, and I was able to finish maximum papers by 4:30, and I was doing the checking in that last half an hour. I mean, this is an input, this is an insight. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का एफआर का पेपर इस बार थोड़ा लेंदी आया था, तो लॉट ऑफ देम वर नॉट एबल टू कंप्लीट. और ये In अच्छा fact, है FR कि मेरा अच्छा था. I could finish by 4:15 in fact FR, क्योंकि मेरा बैलेंस शीट एक ही बार में टैली हुआ था. So many, I mean, most of times people lose grip there only, and I followed the strategy of keeping the compulsory question at the last, क्योंकि मुझे पता है कि मैं वहां अटक जाऊंगी. And if अच्छा. I get lost there, it is gone. Like आपको, if you attempt that first, if it doesn't tally, then you will lose the confidence of the entire paper. You'll start panicking. So I kept that for the end. And to my luck, what I can say is it tallied in the first shot. I'm like, oh, किया मैंने. Good, yeah. No, that's your effort, and that's your mama's effort of getting you writing. Handwriting, yeah. Okay. And I mean, schedule after the paper क्या होता था पेपर से आने के बाद? How do you used to use that time? या मेरा सेंटर यही मैंगलोर में ही था, तो इट वाज हाफ एन आवर 45 मिनट जर्नी. तो 5 o'clock एग्जाम्स खत्म होता था. 5:15 5:20 तक दोस्तों के साथ कैसा गया वो सब डिस्कशन, विच आई वुड से डोंट डू इट. बिकॉज अगर आपको, मेरा एक बार वही हुआ था ऑडिट में. आई हैड डन अटेम्प्टेड वन क्वेश्चन एंड माय फ्रेंड सेड इट वाज रॉन्ग, एंड Okay. इट शुक माय कॉन्फिडेंस फॉर सेकंड बिकॉज आई थॉट ऑडिट मेरा अच्छा गया था. बट Okay. दैट क्वेश्चन, दैट क्या अच्छा गया था, तो फुल स्टॉप रख के वो क्वेश्चन मार्क पे बन गया था. तो आई वुड से डोंट डू दैट, बट एज अ स्टूडेंट आई ऑफ कोर्स डिड इट. So I would say the CA aspirants don't do that mistake. So like you can't go back and change. So there's no point in discussing it. Go True. and prepare for the next paper. So True. I used to come home by 6 o'clock, party सब करने के बाद, and 6 से 6:30 तक कुछ खाना पीना या फ्रूट्स या कुछ मम्मी बनाती थी तो खा लेते थे. And like we are like a Jain family, though we are not literal Jain, but we used to have our dinners by 6:30. अच्छा. तो 7 o'clock में पढ़ने बैठती थी नेक्स्ट पेपर के लिए. सो 7 o'clock से उस रात 11:30 तक, 11:45 12 तक बैठती थी. एंड अगेन नेक्स्ट डे पूरा पढ़ती थी. एंड माई डैड वॉज लाइक, एग्जाम के पहले दिन मैं तुम्हें ज्यादा बैठने नहीं दूंगी, तो ही वो इज टू कम अप, टर्न अप द लाइट एट 11:30 एंड गो. इससे ज्यादा अच्छा. नहीं. अच्छा. And next day he used to wake me up at 6 o'clock. Like in fact, I had around 6.5 hours sleep during the exam time. Wow. This is wow. And I mean, it's a luxury to have that kind of a sleep. yeah, but you will not sleep actually. Like बहुत प्रेशर रहता है कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ. तो yeah, that managing is important at 1.5 day. And the next day, the 1 day leave whatever you get, I used to finish the entire revision. Like मैंने जो मार्क किया था कि 2 star 3 star important है, मैं सिर्फ वही देखती थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं. Because I can't afford to have something new info at that 1.5 period because it will demotivate. And the next day, the morning, whatever I had marked in RTPs, MTPs is important. I used to Okay. see RTPs, MTPs, question papers and all. So एक ही Okay. बार एक साढ़े एक दिन में पूरा क्वेश्चन पेपर्स, आरटीपी, एमटीपी एंड सिलेबस भी कवर हो जाता था मेरा. Okay. और ऑडिट में भी एग्जाम से पहले पूरा रिवाइज कर पाए थे, पूरा सिलेबस हुआ था कवर? I mean, ड्रोन जो चैट सर, एसेज, या एसेज आई फिनिश्ड इन दैट एग्जाम के ऑडिट के पीछे एसएफएम था. तो एसएफएम एग्जाम के बाद जो नाइट थी उसमें मैंने एसेज कवर किया था सारे के सारे आपके ड्रोन चैट की वजह से. आई मीन छोटे छोटे एसेज मैंने छोड़ दिए थे, लाइक यार आई कैन मैनेज इट, आई न्यू इट. एंड द नेक्स्ट डे स्पेशल ऑडिट का द ड्रोन चैट रखने लिया था. एंड ऑफ कोर्स स्टडी मैट में से 2 to 3 चैप्टर्स मैंने पढ़ा था. And I finished that entire thing in the day. And the next day of the exam, जस्ट आरटीपीज एमटीपीज जो आपका ड्रोन चेस्ट में नीचे था ना, उसमें मैंने एक मार्क किया था कि 1 star 2 star. सो आई जस्ट रेफर दैट. ओके. 1 स्टार वो जो अपन मैं इंपॉर्टेंट बोलता था और अपने से गलत हाँ, होते तो दे देते. ओके. हाँ, 2 stars मेरा इंपॉर्टेंट था. या 2 stars एंड अबव आई यूज्ड टू सी. ओके. ओके. एंड जैसे एग्जाम पूरा फिनिश हो गया तुम्हारा, उसके बाद ये जो पीरियड था, बिकॉज योर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मस्ट हैव बीन ओवर, या करेक्ट. एंड टिल द रिजल्ट, वो पीरियड डिड यू यूटिलाइज डूइंग समथिंग? आई मीन, हाउ डिड यू स्पेंड दैट? Actually, I say I didn't spend it efficiently or effectively, whatever, because Very good. but Believe me, like very good.
4 महीने पढ़ा था यार, like I was totally exhausted. I was not in a mood to learn anything new, to be honest. Like मेरे को chill करना है तो करना है, बस खत्म. True, And true. as I said, my brother, he's a voracious reader, so उसने इतने मोटे-मोटे किताब रखे थे, like अच्छा, वॉरेन बफेट का, स्टीव जॉब्स का, एंड आई सेड ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी. तो वो मैं पढ़ती थी, और सुबह मैं लाइब्रेरी जाती थी. मैंने कहा था बीच पास में है, तो एवरी इवनिंग आई यूज्ड टू गो टू बीच फॉर अ वॉक. okay, तो लाइक okay. पूरा का पूरा चिल किया था मैंने. कोई कोर्स नहीं किया था, कोई कोर्स नहीं किया था. आई मीन वो कभी मी टाइम, आइडल टाइम चाहिए, वो बहुत जरूरी है. एग्जैक्टली, बिकॉज 4 महीने आप इतने पढ़ के एग्जॉस्टेड हो चुके होते, लाइक यू नीड सम रिफ्रेशमेंट, वरना पागल हो जाओगे आप. And what are your plans after the, I mean, now the results have come out, so do you plan to study further, go for jobs, business, startup? पढ़ाई का तो हिस्सा खत्म कर दिया था मैंने. एटलीस्ट फॉर अनदर 1 to 2 years, लाइक नहीं, पढ़ाई तो नहीं. तो आई एम प्लानिंग टू गो फॉर एम्प्लॉयमेंट, सो एनीवे. अच्छा, वेरी गुड. तो तुमको फास्ट करियर्स का पता होगा, नहीं होगा तो आई टेल यू दैट लेटर. सो वी डू हैव अपने ऑफ कैंपस ड्राइव्स होती है, तो तुम्हारे लिए पर्टिकुलरली लाइक यू नो देयर इज अ मैंडेट, तो उसके इंटरव्यूज विल हैपन द 3rd week of January. अभी तो तुम इस हफ्ते चिल करो, बट देन आई विल लेट यू. सो यू या श्योर हैप्पी, सर, प्लीज सर. and that is a 35 lakh CTC is ओह what they are ग्रेट. offering. So I mean, लाइक they टेम्पटिंग like हो रहा है सर. बड़ा tempting है, I know. I mean, you know, हर हफ्ते तुम एक आईफोन लेके बदल सकते हो कलर चेंज. That kind. तो yes, great. चलो कुछ क्वेश्चंस और बाकी थे, तुमने बहुत सारी चीजें बता दी, तो थैंक यू फॉर दैट. कोई मोटिवेशन के लिए डिड यू लुक अप टू एनी पर्टिकुलर पर्सन, या ऐसा कुछ करते थे? No, sir. Motivation, like my family was everything to me. Like whenever I felt demotivated, they were there for me. Okay. Instagram और Facebook? To be honest, I am not there in both. अच्छा. अकाउंट ही नहीं खोला था मैंने, बिकॉज आई फील आई विल गेट डिस्ट्रैक्टेड इन दैट. सो लाइक जब तक सीए नहीं बनती तब तक नहीं खोलूंगी. अभी मेरे दोस्त का मैसेज आया था कि अब तो खोल यार, अब तो सीए बन गई है तो कुछ तो शर्म कर. चलो AIR2 का एक और राज पता पड़ गया अब हमें. करेक्ट. यूट्यूब में शॉर्ट्स या वीडियोस? शॉर्ट्स. खाने में क्या पसंद? आई मीन यू नो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं. आई एम अ वेज सर, प्योर वेज. तो पनीर से आगे मेरा कुछ जाता ही नहीं है. अच्छा. ओके. मैक्स टू मैक्स लेवल इज पनीर. वाओ, वेरी गुड. देन सेल्फ स्टडी और ग्रुप स्टडी? सेल्फ. ग्रुप में तो बातें ही होती है. ट्रू. एंड बीइंग गर्ल्स तो और ज्यादा होती है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट. या एग्जैक्टली. लाइक ICI मटेरियल तुमने बुक्स सभी देखे थे, मॉड्यूल्स? हाँ, या आईसीए मैट वाज लाइक अ बाइबल फॉर मी. फॉर ऑल सबके लिए. सब्जेक्ट्स? या ऑडिट के लिए, या आपका ड्रोन चार्ट्स काफी था मेरे लिए, बिकॉज इट कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द कर. मैं एक दो बार मैं यूज्ड टू लाइक पूरा का पूरा ड्रोन चार्ट मैंने ऐसे ही नहीं दिया था, क्योंकि इट इज सिंपलर, इट इज इजियर. आई वाज ऑलवेज टेकिंग स्टडी मेट, सो आई फॉर वन चैप्टर आई कंपेयर्ड लाइक जो इसमें है क्या वो ड्रोन चार्ट्स में है. Okay. Then I got confidence, okay, इसमें भी है, then I stick to drone charts. Because it covered everything. Because I feel personally like ICA मैट आप पढ़ोगे ना तो it's like more than enough. आप आराम से पास कर सकते हो. Just for the sake of understanding better the ICA content only, I prefer drone chart. Because the way it is presented and all, it's awesome. तुमने ड्रोन चार्ट का ऑडिट कर दिया एक तरह से. नहीं सर, वो like it really helped me a lot, especially for essays. Like उसके बिना तो शायद मैं नहीं कर पाती थी. हाँ, बहुत लेंदी है तो it becomes a little difficult. Yes. इंटर के बाद जब तुम्हारी क्लासेस या तुम जब पढ़ती थी तो were you regular throughout those 2 years, 2.5 years period? No. Like during peak seasons of tax audit and all, like घर आते समय 8:30 हो जाता था, तो you were tired, you won't feel like reading. तो घर आके सो जाती थी मैं. तो actually my proper study started when I opted for industrial training. Okay. So I started on October 1, 2021. So उसके बाद I took it seriously. So it started from there. Daily मैं 6 बजे घर आ जाती थी, क्योंकि वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग था. तो लाइक टाइम के पक्के थे वो, इस टाइम पे एग्जिट होना है मतलब होना है. तो 1 मिनट भी ज्यादा नहीं रुकेंगे. So it really helped me to study also. And my neighbor, he was also working in that same company. So pick up and drop वो भी हो जाता है उसी में. तो 5 मिनट में घर like आके छोड़ देते. तो I used to study for 4 hours every day. Okay. अच्छा, डेली बेसिस हम during that time there. अच्छा. Industrial training period. Okay. तो I mean, do you suggest industrial training करना चाहिए? What is your take? According to me personally, it really helped me a lot, because auditor, जब आप articleship करते हो तो you'll have a perspective only the auditor.
But when you do industrial training, you will get to know like how exactly the back end works, like financials kaise bante hai. Like we got good exposure of SAPs also. Hardly I knew the full form of SAP before going for industrial training. So I got a good exposure of SAPs, like financials kaise bante hain, and exactly the internal control, like whatever audit mein hai कि internal control ka importance kya hai, the entire 315 330 series, like I could practically relate it to the exposure which I'm getting in industrial training. I would suggest it if it is giving good exposure, definitely go for it. It was the best decision of my life, to be honest. Okay, so I mean, तुमने 6 महीने attempt delay किया, but it was worth it. Yeah, it was really worth it. Like I got good exposure. I got good hold on Microsoft Excel, SAPs, the entire how exactly the corporate culture works. Right. It really helped me a lot. I agree. In fact, फिर you've proven with your academics, अब इस पूरे का कहीं ना कहीं, in your placements also you'll have even more opportunities. Exactly. I mean, there's still no dearth of opportunities for rankers, but then those coveted जो हर किसी को चाहिए वो jobs तो हमेशा थोड़े ही होते हैं. So correct, it will give you an edge, and you take my word for it. Stock market में invest किया तुमने कभी? मेरा एक दोस्त है. I used to give money to him and I used to handle stock market. से थोड़े बहुत shares है मेरा. Okay, nothing much. Okay. MCQs पहले करते थे तुम एग्जाम में या बीच में? पहले ऑफ कोर्स मेरे वो मैं कहना बोलते थे लाइक डीटी और ऑडिट बाकी सब एमसीक्यू पेपर्स में 2 o'clock एग्जाम स्टार्ट होता था. आई यूज्ड टू अलॉट हाफ एन आवर फॉर एमसीक्यूज. उस हाफ एन आवर में आई थॉट लाइक आई शुड गेट एटलीस्ट 20-25 मार्क्स 20 मार्क्स इन एमसीक्यू, क्योंकि द रिमेन 20 तो वैसे ही हो जाता था, बिकॉज दैट्स द प्लेस वेयर यू कैन स्कोर मोर विद द लेस टाइम. सो एमसीक्यूज आई यूज्ड टू अटेम्प्ट फर्स्ट ऑल द टाइम, सभी पेपर में. So that will give you that confidence कि हाँ exactly. So 20 marks secure है मेरा. Correct. So then passing or 40 becomes easier in that sense. Easier, exactly. Correct. Like even if you couldn't attempt the entire 70 marks ka paper, you'll get at least half of it. Psychologically, you are relieved in that sense. Yeah, exactly. It used to relieve tension. Like 30 marks तो हो गया मेरा. इतना तो हो गया, correct. हाँ, yeah. I agree to that, correct. Then somebody is asking, जब मतलब थ्योरी पढ़ते हैं तो निमोनिक्स या कोई स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं मतलब याद रखने के लिए? या वियर्ड स्ट्रैटेजीज, लाइक कभी फूड का नाम तो कभी कोई पंछी का नाम या कभी मेरा फेवरेट एक्टर पेन का नाम. बहुत वियर्ड निमोनिक्स थे मेरे, तो इट रियली हेल्प्स मी. ओके, तो एग्जाम में वो याद आते हैं? हाँ, कभी कभी ऐसा होता था कि यार न्यूमोनिक्स से याद है, फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा था. करेक्ट, वही. लाइक अब सभी कुछ क्लासेस में देखा था कि यार न्यूमोनिक्स है, एग्जांपल्स याद आता है पर डिटेल में नहीं याद आता है. तो आई टुक वन YouTube video, so it started questioning there for me. So okay. So make sure you remember the mnemonics and the full form also. करेक्ट, वो हो जाता है, आई नो. ठीक है. लाइक आप भाव में खो जाते हो कभी न्यूमोनिक्स के, तो it becomes, और फिर वहां प्रेशर भी होता है ना, तो unless and until is very strong, crystal clear. Yeah, it becomes a little difficult, correct. Or last few questions. One, what tip would you like to give to all the people who are preparing for their CA intermediate or final exams? One tip is don't take stress, don't panic. It's fine, because I always follow my brother's advice. Like mind is like a water. Remember that always. Like as long as you're calm, everything will be clear. Like if you're stressed, take a deep breath in, breathe out. It will help you out. And take care of your health. Don't sacrifice. Like अगर आप रात को 2 बजे 3 बजे तक बैठ के पढ़ोगे, and if you can't, if you won't be able to go to exam hall and write what you have studied, there's a lot of 4 months effort, what effort will be a waste. So take good care of your health. And even if 1 or 2 papers goes bad, like not as per your expectation, I won't say goes bad, because I felt my law or DT was gone, but it actually was not gone. It helped. I mean, I could get exemption in that both the papers. So don't feel, even if the paper is tough, they will give marks for the steps. Like don't give up at any point of time. Like paper kharab gaya, I don't think I'll clear. So don't give up any time. It happens with everyone. Like even if you feel during the study leave, whatever you'll get, you will feel demotivated. You'll start self-doubting, self-criticizing. But it's okay. It's all part and parcel of the CA course. You will the moment when you see the results and the CA prefix, it like you will feel that all those efforts, the stress, whatever gone through is worth it. So never give up. Yeah, that's all. And keep consistently studying. Hard work matters, and smart work also during that 1.5 days period. Make a schedule. Prepare as per the schedule. Make a proper planning. Like इस दिन से खत्म होना है, मतलब होना है. So yeah, that's all. So hard work as in जो पहला preparation होता है. हाँ, first reading को hard work. Yeah. Okay. That should not be like plain. Okay, first reading should not be ABC. It should be like complete. हाँ, exactly. You should know everything. Like क्या क्या है इसमें.
Then True. first revision may you'll get to know like I can skip this, I can skip this. So True. Fair enough. So I'll just summarize, this is very important for the students. So yes, what you said is one, stay calm, that yeah, water example. exactly. Dusra, take good care of your Health, health, which is very important. Otherwise, you'll lose time in your mind. Otherwise, will not exactly, work. थर्ड, रैंकर्स के साथ भी ऐसा होता है कि पेपर बिगड़ते हैं कई बार. exactly. वी हैव सेट इन आवर ओन स्टैंडर्ड्स टू हाई, उसके कंपैरिजन में पेपर बिगड़ता है, पर हाँ, एब्सोल्यूट exactly. नहीं बिगड़ता है. So हाँ, that exactly. happens. Kind of relax with that. And apart from all this, you don't need to take stress. चिल हाँ, रहने का है, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करने का है. exactly. Yeah. वर्क फर्स्ट प्रिपरेशन में तो लगेगा, शुरू से स्मार्ट वर्क किया तो बाद में दिक्कत होगी, फिर हो जाएगी. easy Yeah, बिल्कुल. Yeah. तो one First you reading should should have be complete. Yeah. correct, and then you can turn out to smart work in that sense. Exactly. सेल्फ डाउट से एकदम दूर रहने का है, काम करना है अपने को तो काम होगा. Yes. Yes. ठीक है, very very important 5 inputs. Thank you. And I mean, all said and done, one last question, and you can skip if you want to. तुमने जब तुम्हारे मार्क्स देखे, आई एम श्योर यू मस्ट बी इलेटेड, दैट एक्सपीरियंस, वो सारी चीजें. फिर उसके बाद तुमने AIR1 के मार्क्स कब देखे, और वो जो डिफरेंस है उससे कैसा लगा तुमको? To be honest, when the ICA president called, after that I was getting calls continuously. So I didn't go to check the other ka marks. Like 618, I think I got through around 10:30 or 11 o'clock. I'm almost 2 hours later after seeing my results. क्योंकि मैंने rank expect ही नहीं किया था. So that actually didn't make any difference to me. Like एक mark, I mean, I never got that. काश एक mark मेरे को मिल जाता. I mean, I never got that because ये ही मुझे unexpectedly मिला था. So I am happy with whatever I got, to be honest. Yeah. I mean, I appreciate. हालांकि तुम बोलती हो अरे सर एक मार्क और ले आते, तो हमारे लिए हो जाता कि यार थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए बच्चों को बोलते एक एक मार्क की मेहनत करो, एक मार्क भी काउंट करता है. But it is, I mean, it's not like that always. I mean, in absolute sense, AIR2 is huge. And एक मार्क वाली चीज से I'm very happy you said that. I was not concerned with that altogether, because I have seen in my career students जिनके साथ कभी ऐसा हुआ है, and they become so disheartened with such things. I remember, मैंने पहले भी शेयर किया, 12th की मेरी एक स्टूडेंट थी, I remember her so very well. उसके 95 पॉइंट कुछ % आए थे, और उसके इकोनॉमिक्स में 90 आए, तो वो रोने लग गई कि इसमें और आ जाता तो ये हो जाता. मुझे पहले लगा खुशी के आंसू है, बाद में मालूम पड़ा दुख के आंसू है. That's extreme. I mean, ऐसा नहीं होना चाहिए. Exactly. Like, wow, yeah. I mean, we scheduled this talk for 15 minutes, but I have taken your 40-43 minutes with the kind of person you are, जो billing अब तुम करने वाली हो corporate में. This is a huge precious time we've taken. पैसा लगेगा सर आपको भी. पर गुरुदक्षिणा है तो ठीक है. चलो, I am obliged. Thank you so much. Chalo, thank you very much. We'll complete this session here. And once again, thank you. FAST की पूरी team is so proud of you. I mean, faculty के लिए तो ठीक है, rank तुम्हारी होती है, तुम्हारी मेहनत होती है. We teach so many students, not everybody secures a rank. So that is hence proven that it is your effort. But yes, it is very motivating for a faculty and the whole team. Because when the results come out, team को भी बड़ा excitement रहता है कि यार how many students have secured rank, कितने पास हो रहे हैं, कितनों के अच्छे response आ रहे हैं. So that momentum needs to keep going, and you've given that momentum once again to FAST. So thank you for everybody's side.